Now we have to study about menstrual cycle. Menstrual cycle. Beginning of the reproductive cycle, reproductive phase, is indicated by means of shedding of endometrial wall together with discharge of degenerated secondary oocyte. Means initiation of reproductive phase is marked by menarche and termination of the reproductive phase is indicated by last bleeding of life known as menopause. Right? So this is the first bleeding and this is the last bleeding. Last bleeding phase of life and first bleeding phase of life. It is a natural phenomenon. Menstrual cycle is a periodic event that is repeated after 28 days, right from menarche to the menopause. So what the menstrual cycle is, it is clear? Menstrual cycle is a cyclic event. It is a periodic event in which there is shedding of endometrial lining, endometrial wall of the uterus together with degenerated ovum. And this cycle is repeated after 28 days, after an interval of 28 days. This cycle is controlled by different hormones. A number of hormones are involved in this cycle. These hormones are, यदि आप देखें, हम लोग पढ़े थे GnRH is released by hypothalamus. Hypothalamus releases GnRH, thalamus releases GnRH, which in turn acts on anterior pituitary lobe, which acts on anterior pituitary lobe. Pituitary releases FSH and LH. Pituitary का रिलीज करता है क्या? FSH and LH. Right? FSH is responsible for development of ovarian follicles. पता है ना आपको? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. Right? Now, FSH acts on the follicles. The follicular cells releases estrogens. follicular cell क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन.
right? LH is responsible for ovulation. LH is responsible for ovulation, means LH breaks mature follicle, okay, and brings ovulation. LH breaks mature follicle, Graafian follicle, and ovulation is caused. Secondary oocyte is released, ovum is released, and the remaining granulosa cells form corpus luteum. Remaining granulosa cells क्या बनाता है बाबू? Corpus luteum. This corpus luteum releases progesterone as well as estrogen. Corpus luteum releases progesterone as well as estrogen. Progesterone is responsible for maintenance of endometrial wall. Progesterone is responsible for maintenance of endometrial wall. If level of progesterone becomes low, then endometrial lining is broken down and menstruation is caused, right? So these are the different hormones under the action of which there is periodic changes in the uterine wall as well as in ovarian follicles, and menstrual cycle is repeated. समझ में आ गया आपको क्या क्या हार्मोन्स हैं? GnRH कौन छोड़ा? हाइपोथैलेमस. GnRH किस पर एक्ट किया? पिट्यूटरी पर. पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ? FSH एंड LH. FSH किसको स्टिमुलेट किया? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है. FSH फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और फॉलिकल्स से निकलता है क्या? एस्ट्रोजन. LH फॉलिकल्स को तोड़ता है, मैच्योर फॉलिकल्स को, और ओव्यूलेशन करता है, ओवम निकलता है, और जो फॉलिकल्स का सेल बच गया, कौन सा सेल बच जाएगा? ग्रेनुलोसा सेल्स बच जाएगा, थीका सेल्स बच जाएगा ओवरी में. तो वहां बनेगा कॉर्पस ल्यूटम. कॉर्पस ल्यूटम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक हाई रहेगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं करेगा. एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटम धीरे धीरे डिजेनरेट करेगा. तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल लो होगा. समझे ना? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट LH और FSH पर भी होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे. अब ये समझिए कि कॉर्पस ल्यूटम रिलीज कर रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. जब तक कॉर्पस ल्यूटम है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट हाई रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट करेगा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यदि लो होगा, तो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वह उसको मेंटेन नहीं कर सकता, और वह एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा. एंड जब एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा तो ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो बाहर निकलेगा ब्लड के साथ, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज menstruation or menstrual bleeding.
राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स इन ओवरी एज वेल एज इन यूटेरस। यूटेरस ओवरी में क्या चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल।